Okay, before I discuss adding something to the scene, I really want your attention to be given to the fact कि यहाँ पे जैसे हम ये दरख्त देख रहे हैं, हर दरख्त का एक साया है और ये साया हर दरख्त के नीचे अकॉर्डिंग टू दिस लाइट सोर्स पड़ रहा है. ऊपर अगर आप देखें तो ये वाइट थिंग इज़ द लाइट सोर्स, ये हमारा डायरेक्शनल लाइट है. दूर से देखें तो शेडोज़ नहीं हैं, करीब जाएं तो ये शेडोज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं. ये कॉनिफर्स में भी ऐसे ही हो रहा है और जब आप करीब जाएं तो ब्रॉड लीफ में भी ऐसे हो रहा है. दिस इज़ एक्चुअली कैन बी समथिंग विच कैन बी कंट्रोल्ड. इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डायरेक्शनल लाइट से. थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं डायरेक्शन लाइट की, हम क्या चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल करंटली डायरेक्शन लाइट के अंदर आप देखेंगे कि इसका कलर लाइट का वाइट है, इसको हम वाइट ही रहने देंगे. इसमें शेडो टाइप जो है वो सॉफ्ट शेडो है. अगर मैं इसको हार्ड शेडो कर दूं तो आप देखेंगे कि बहुत ही क्रिस्प किस्म का शेडो दरख्त के नीचे पड़ रहा है. अगर मैं इसको सॉफ्ट शेडो कर दूं तो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल मोर ब्लर. और अगर मैं इसको नो शेडो कर दूं तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो शेडो फॉर एनीथिंग बेस्ड ऑन दिस लाइट. यूजुअली इस पे सॉफ्ट शेडो हम लगाते हैं. क्यों? बिकॉज आपके जीपीयू को, आपके प्रोसेसर को, आपके ग्राफिक्स कार्ड को कम मेहनत करनी पड़ती है अगर हम हार्ड शेडोज़ ना लगाएं, सॉफ्ट शेडोज़ लगाएं. अगर हम हार्ड शेडोज़ लगा दें तब भी वेल फॉर नाउ वी कैन एक्चुअली लुक अराउंड कि हम वी कैन फ्लाई अराउंड द सीन. और अब आप देखेंगे कि ये शेडोज़ है ना, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्प शेडोज़ हैं, जैसे आप एक्चुअली किसी दरख्त के नीचे चले गए हों और एक एक पत्ते का सेपरेट शेडो हमें नज़र आ रहा है. आई डोंट नो, हमें अक्सर इतनी तफसीली शेडो की ज़रूरत तो नहीं होती, बट एनीवे सो आप डायरेक्शन लाइट में इसको चेंज कर सकते हैं. ऑल्सो I'll probably bring this back to soft shadow again. इसी तरह रियल टाइम शेडो की स्ट्रेंथ है, बायस है. मे बी वी कैन यूज़ द क्वालिटी टू बी हायर. And we can also set the actual basic rotation of the light. अभी आप देखेंगे किसी एक दरख्त के पास जाके ये हमारी लाइट है. अगर हम इस लाइट को रोटेट करें, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे रोटेट करें, तो आप देखेंगे कि शेडोज एक्चुअली कैन गो टॉलर और शॉर्टर डिपेंडिंग. सो दिस इज लाइक नून and this is like 5 p.m. and the sun has gone down. So this literally is playing like a sun for us. So if you want to have a sunset situation, you could take the sun down here and you will see the longer shadows for every tree that you have. Or if you want to go for the noon, you could probably change the rotation in such a way that the sun is right literally at the top of the objects, and accordingly you will have the soft or hard shadows working. So playing around with the light rotation, direction light की rotation से खेलने से आपको काफ़ी interesting effects मिल सकते हैं. Last but not least, maybe you can have a different tint of the light. So color में भी अगर हम white की बजाय थोड़ा सा yellow या थोड़ा सा reddish कर लें तो it could probably talk about a different weather condition. So ये बहुत ज़्यादा dark हो गया, maybe something like that. So this is a more of a more orange sunlight coming in, yeah, more green light coming in. I don't know, blue will be weird, and any other effects like red, pink will not be very natural. But we could get a sun and moonlight effect if we change it to something like cyan and decrease the intensity of the light, so it goes darker, and this is more of a नाइट व्यू. हालांकि लाइट हमारी बिल्कुल सर के ऊपर है, लेकिन हमने इस लाइट की इंटेंसिटी कम तो कर दी है. शेडो भी बढ़ रहा है, लेकिन दिस लुक्स लाइक 14th मून नाइट के 14वीं के चांद जिस तरह से आपका निकल रहा हो. सो लाइट से बड़ा फ़र्क पड़ता है आपके सीन के करंट सिनेरियो पे. आई विल पुट द इंटेंसिटी बैक टू 1 एंड आई विल चेंज द कलर टू समथिंग येलोइश वाइट अगेन. चलें जी, तो हमारा सीन अब सेट है और अब हम एक्शन वाला काम शुरू करने लगे.